Hello students, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 9th January. The session will be quite interesting. In this video students, we will be talking about the India's first state to integrate forest ecosystem into the green GDP. Then we will be talking about India and Malaysia. They have recently signed the first security dialogue. Then Titagarh Rail, they have delivered India's first driverless Make in India train set to Bengaluru Metro. Next thing is International Solar Alliance, the headquarter of which is in Gurugram, Haryana. We will be talking about it. Then RBI, they have released the MD on credit information reporting. Then SEBI, they have eased the settlement norms for the inactive brokerage accounts. So these are some important and many more current affairs that we'll be discussing in this video. Also students, we upload the daily current affairs video at 5 a.m. in the morning. We upload the weekly current affairs, monthly current affairs and topic wise regularly so that it becomes easy for you to prepare for the competitive exams. Also students, share the link of this video with your friends, cousins, relatives, neighbors and let them know about this interesting platform. And if you are new to our channel students and haven't subscribed to us, do subscribe. We are one-stop solution for current affairs. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. Let's start students. We are talking about national affairs, and in this picture you can see here he is Ashwini Vaishnav. He is our Union Minister of Ministry of Railways. Then he is our Union Minister of Ministry of Information and Broadcasting and MEI. So he, along with the Governor of Assam, that is Lakshman Prasad Acharya ji, and the Chief Minister of Assam, Himanta Biswa Sarma, he has together along with them has inaugurated NIELIT. Now what is this NIELIT? Right, this is a deemed to be university and it has been launched at 12 locations including 5 locations in the northeastern states during an event in Guwahati, Assam. Now what is this NIELIT? It is your National Institute of Electronics and Information and Technology. This deemed to be university, it comes under MEITY. Right, it was established in 1994, the aim of which was to enhance research and development in electronics and information and technology sector. Right, apart from this you can see, right, this is your NIELIT. Right, during this, remember this NIELIT and Bengaluru, Karnataka based Tata Electronics Private Limited, they together also signed a memorandum of understanding that will enhance the semiconductor skill development ecosystem in our India. If we talk about this TEPL, that is Tata Electronics Private Limited, the headquarter of which is in Bengaluru, Karnataka. Right, here you can see this NIELIT, the only university under MEITY, established in 1994. It aims to train more than 3.7 million students in emerging technologies over the next 5 years, and it follows the National Education Policy 2020, which focuses on making education more accessible, flexible and relevant to the industry needs. Next, Union Home Minister or our Home Minister Amit Shah has launched Bharat Pol, a portal to revolutionize the international crime investigation. So this Bharat Pol has recently been launched. Take a note of this. It was launched by whom? It was launched by Amit Shah, our Home Minister, right? And it was launched where? It was launched at Bharat Mandapam, that is in New Delhi, right? And here remember this portal, it is developed by CBI.
the aim of which is basically to streamline the process for the law enforcement agencies in India so that they can seek international assistance from Interpol in the criminal matters. So any individual who is a criminal and who has shifted from our country to different parts of the world or to a different country, so to make sure that that person, right, is captured and he is punished, right? For the same reason this has been launched, that is Bharat Pol, launched by Amit Shah, correct, launched by CBI, and this portal was developed by CBI is your Central Bureau of Investigation, correct. So portal developed by CBI which aims to streamline the process for law enforcement agencies in India to seek Interpol's help or Interpol's assistance in criminal matters, correct. This portal will provide quicker and more efficient real-time sharing of the information. Also, the key 5 modules here are Interpol notices, references, broadcast, resources, and many more, correct. Take a note of it. Next is India's first state to integrate forest ecosystem into green GDP. Now see, India's first state, which is it? It is Chhattisgarh, and it became the first state in India that has introduced an innovative plan that will connect the ecosystem services of their forest with the green GDP. This initiative will basically help the environment. It will contribute to forest by providing clean air, water conservation, biodiversity, and help in the state's economic progress also. Also, it aligns with the Prime Minister Narendra Modi's vision to make India a developed country by 2047. Also remember, Chhattisgarh, it is the state where the forest cover is 44% of the land and it is full of natural resources. Here, this forest plays a dual role in Chhattisgarh's economy and environment, significantly boosting the rural economy through products such as tendu leaves, lac, honey, medicinal plants, also helping combat the climate change by acting as a carbon sink. Right? Take a note of this. Next is India and Malaysia. The first security dialogue between them was held to strengthen the bilateral cooperation between these two countries. Right? It was the first security dialogue, right, that was held, and it was from India. He was our national security advisor, as you can see him in the picture, Ajit Dovalji, who took part in this dialogue, right. Between the countries, we saw that both the countries will be working on developing cyber security, will work against terrorism, will focus on defense. They will be focusing on commitment towards security in the challenging world and also help the trade between them, right. Here also you can see Malaysia is India's 13th largest trade partner and the third largest among association of Southeast Asian members. And here Defense Minister Rajnath Singh inaugurated Hindustan Aeronautic Limited's first regional office in Kuala Lumpur, Malaysia. Moving on, students. Next is Titagarh Rail. They have delivered India's first driverless Make in India train set to Bengaluru Metro. I repeat, India's first driverless made in India train set, right, to Bengaluru Metro Rail Corporation. Also, this marks a pivotal moment for the yellow line of the Bengaluru Metro, and this train set, it is automated, right? Driverless means it is automated, right? It has been developed with stainless steel, correct, for better performance, and this was constructed at the Titagarh Rail Metro Manufacturing Facility, that is in West Bengal. Next is International Affairs, students. GEAPP. What is this GEAPP? It is your Global Energy Alliance for People and Planet. They have recently partnered with International Solar Alliance to propel the India's green energy future. See, first thing you need to understand that it was India and France. It was for International Solar Alliance. It was our India and France who jointly launched this in 2015, the headquarter of which is in Gurugram, Haryana, right? So here this GEAPP, that is Global Energy Alliance for People, they have partnered with International Solar Alliance. The aim of the International Solar Alliance is basically to encourage the developing countries and underdeveloped countries so that they can start using the renewable source of energy, that is solar energy, as in the underdeveloped areas, right? It becomes very difficult to provide full infrastructure, develop full grids there. So these solar panels, these photovoltaic panels play a crucial role in providing electricity to such areas. So here recently they have partnered together so that India's renewable energy sector can grow. And here with this partnership you will be seeing India's target is of 500 gigawatt of renewable energy capacity by 2030. Here you will be seeing multi key initiatives that has been launched here.
First, it is your multi-donor trust fund, right? So this has been set up with the goal of raising $100 million to support the solar energy projects in India. Take a note of it. Then second is Duet. Duet is your digitalization of utilities for energy transition. This Duet program will focus on modernizing India's grid system to create a digital database of grid assets, including their locations and specification. Then third is your Antis 2.0. This platform is set to launch in January 2025 and was designed to support the startups by offering funding, market access, mentoring, and to scale the innovative solutions for the India's clean energy initiative. Next is RBI, Reserve Bank of India. They have released MD on credit information reporting. Now, what is this MD that has been launched? MD is your master direction, correct? So RBI, they have released a master direction on the credit information reporting, right? With this will consolidate the various guidelines for bank and financial institutions that are for reporting of customer credit information, right? The main aim that why this was established is basically for reporting that who is taking a loan, right? How much loan the person is taking, is the person is in the position that can he pay back the loan that he is taking, right? What is his income sources, what is the assets that he is having, what is the collateral that he is giving instead of the loan, right? So basically for all these things, right, and for the reporting and providing the credit information that will ensure the confidability and security of sensitive credit data so that it can be used to provide better loans and better services to the individuals. Also, it will make sure that the bank that is giving loan is on the safe side if the person defaults, and if that person individual becomes a NPA, that is non-performing asset, that in case the bank can sustain that loss, correct? So here the CICs, that is credit information companies, they are required to notify the customers via short message services or email whenever their credit information report is assessed by a specific user. Then these CICs, they shall send alerts only when the CIR, that is credit information report inquiry, is reflected in the customer CIR. Then credit institutions including banks and NBFCs, they must inform the customer of the reason for rejecting their request for data correction if applicable, to help them better understand the issues in their CIR. Then if we talk about the CICs, credit information companies, these CSIs, they collect public data, credit transactions and payment histories of people and businesses, mainly for loans and credit cards. They collect data from banks, financial institutions, lenders and other credit granting entities, and then compile it into their credit report, and based on this credit report only further loans are provided. Next is SEBI. They have eased the settlement norms for the inactive brokerage accounts. So recently SEBI, they have eased these norms for the brokerage accounts that remain inactive for over 30 calendar days. It will take effect immediately, replacing the SEBI's August 2024 circular on the same matter. This change aims to reduce the procedural inefficiencies for the brokers, making the process smoother by eliminating the daily settlement requirement. Next is MFIN, that is Microfinance Institution Network, the self-regulatory organization for the microfinance sector. It has recently announced for the postponement of their new rule that limits the number of lenders to 3 per borrower, down from 4 borrowers to manage the microfinance risk. I repeat, MFIN defers the limit on lenders to 3 borrowers from 1st of April 2025. Correct? Take a note of this. That means this limit has been deferred, that means postponed. It will be applicable from 1st of April 2025. These new regulations are aimed at ensuring better financial management and preventing over indebtedness, right? What this means is that an individual can lend from 3 borrowers, right? Earlier it was 4 borrowers, but now it has been decided to the 3 borrowers, correct? And now this decision has been postponed till when? It was earlier scheduled to take place from 1st of January, but now it has been extended to 1st of April 2025. Correct? Take a note of it. Next is economy and business. India's GDP expected to grow by 6.4% in FY25 against 8.2% in FY24. Right? Because we know in FY24 our country grew by 8.2%. But this year there has been a sudden slowdown, right? And we are seeing that this year India's GDP in FY25 is expected to grow by 6.4%. This data was released by
NSO, National Statistical Office. NSO comes under whom? It comes under the Ministry of Statistics and Program Implementation, and they have recently released the first advanced estimates of GDP for FY25. Here, according to them, as I mentioned, we will be expecting a growth of 6.4%. That is a 4-year lowest growth that we are seeing this year in FY25. If we look at the real GDP growth as per the NSO data, India's real GDP, it is expected to grow at 6.4% in FY25. Whereas if we talk about the nominal GDP, it is expected to grow at 9.7% in FY25 compared to 9.6% in FY24. Whereas if we talk about GVA, that is your gross value added, it registered a growth of 6.4% as compared to 7.2% in FY25. Moving on, next is SBI. They have lowered the India's GDP forecast to 6.3% for FY25. That is State Bank of India. They projected that India will be growing by just 6.3%. Whereas here you can see it is India's, according to NSO, we are expecting to grow by 6.4%. Whereas State Bank of India, it is expecting that India will be growing by 6.3%. Next is CIL and IREL. CIL, it is your Coal India Limited. It is Kolkata West Bengal based CIL. It comes under the Ministry of Coal. They have signed a non-binding memorandum of understanding with Mumbai, Maharashtra based Indian Rare Earths Limited. It is a public sector undertaking that comes under the Department of Atomic Energy. And the aim of this MOU, this non-binding MOU, is basically for collaborating for the development of critical minerals. Critical minerals are those minerals that are necessary or important for the development of our country. This partnership will help to boost the mine or basically mining of these critical minerals, extracting these minerals, refining of these critical minerals, right? And they will be used for various sector or will be used in various sectors that include your electronics, renewable energy sector, defense sector, pharmaceutical sector, and so on. Next is Tata Elxsi. They have partnered with CSIR's arm NAL. NAL is your National Aerospace Laboratories for ARM solutions. ARM is your Advanced Air Mobility Solutions, right? So it is Bengaluru, Karnataka based Tata Elxsi Limited, right? They partnered with CSIR's arm NAL for Advanced Air Mobility Solutions. Under this, we will be working upon unmanned aerial vehicles, right? Then urban air mobility vehicles, then electric vehicle takeoff and landing aircrafts, right? Or we can say here drones will be worked upon. Moving on, next we are talking about is some CCI approvals. CCI is your Competition Commission of India. First is your Tata Electronics Private Limited, wholly owned subsidiary of Tata Sons. They will acquire a majority stake in Apple's contract manufacturer Pentagon Technologies India Private Limited. Second is your Gentari Renewables India Management Private Limited will be acquiring 21 special purpose vehicles owning renewable power generation plants alongside the holding companies of certain SPVs to boost the Gentari's renewable energy portfolio. Then third is USA based global investment firm CA Carob Investment to acquire 68.9% stake in Roop Automotives Limited, a key player in India's automotive component industry. If we talk about CCI, who is the chairman of CCI? Ravneet Kaur. Moving on. Next is related to sports. Australia has beaten India by 3-1 to win the Border Gavaskar Trophy after 10 years. Take a note of it. Direct question: who won the Border Gavaskar Trophy? It was won by Australia. Australia defeated India by 3-1 in the series, and it was final was held in Sydney, Australia. Right. This Border Gavaskar Trophy was scheduled from 22nd of November till 7th of January in Australia itself, in Sydney, Australia, and this marks the Australia's first win in over the last 10 years. India, our country, has won 4 times this Border Gavaskar Trophy. Correct? Take a note of it. Moving on. Then apart from this, remember, India has broken 47-year record with commanding Perth Test win. First thing. Second, Bumrah named the player of the series after a record-breaking tour of Australia. So who has been named as the player of the series here? Jasprit Bumrah. Moving on, next is your Earth's Rotation Day, observed on 8th of January. This day is observed basically to create awareness about the Earth's rotational motion, and it is 8th of January that we observe this day. This year it was 174th birth anniversary of Leon Foucault's demonstration. Leon Foucault was a French physicist who demonstrated the revolution of Earth in 1851 first time.
Apart from this, the spinning of Earth around its axis is called rotation, right? We complete one full rotation in 23 hours and 56 minutes. Take a note of this, which is rounded off to 24 hours. Apart from this, the full rotation is known as one Earth day and is responsible for a day and night cycles. Apart from this, Earth rotates from west to east, and the sun and the moon appears to move from east to west across the sky. Next is to state news, students. Recently, Chief Minister of Karnataka, Siddaramaiah, he has launched a health insurance scheme by the name Karnataka State Road Transport Corporation Arogya. Right, this is the name of the health insurance scheme. This will provide cashless medical treatment to the Karnataka State Road Transport Corporation employees and their families at Vidhana Soudha in Bangalore, Karnataka. This scheme will be benefiting 1.5 lakh people, that will include 34,000 employees and their dependents in over 275 hospitals. Also, here this Karnataka State Road Transport Corporation, they will be deducting 650 rupees per month from the salaries of each beneficiary for the scheme, and this amount will increase by 50 rupees every year. So that's all for the day, students. Now let's move to some revision part that will be beneficial for your learning. Name the project that was recently launched by the Indian Army to provide support and services to the defense pensioners, veterans and their families. What is the name of that project? The project is Naman, right? Project Naman. This project Naman will focus on the implementation of various systems for pension administration Rakshak. That is your SPARSH. What is SPARSH? System for Pension Administration Rakshak. This is a digital pension system that will streamline all the processes that are related to pension. Next, which organization has recently signed an airframer contract with Safal Helicopters Engines Private Limited to develop and supply a helicopter engine by the name Aravali? So, name of the helicopter engine, Aravali. So, which organization has signed this airframer contract with Safal Helicopters Limited? It is your Hindustan Aeronautics Limited, that is HAL. And this engine, it has been named after the Aravali mountain ranges. Next, name the bilateral naval exercise between India and France that was held in Mediterranean Sea from 2nd to 4th of September 2024. So what is the name of that bilateral exercise? The exercise is Exercise Varuna, right? Then this Exercise Varuna, it is the 22nd edition of this exercise held between India and France. Take a note of this, right? And in this, from Indian side, INS Tabar took part in this exercise. Next, name the aerospace company that has recently achieved the successful maiden flight of the India's first indigenous unmanned bomber aircraft, that is FWD-200B. So what is the name of that company? That is Flying Wedge Defense and Aerospace. This aircraft is classified as a medium altitude long endurance, that is MALE unmanned aerial vehicle, and it has a wingspan of 5 meters and a length of 3.5 meters. It can fly at a cruising speed of 152 km per hour with a maximum speed of almost 250 km per hour. Next is in September, India successfully launched Agni-4 missile from the integrated test range in Chandipur, Odisha. That is Agni-4. It belongs to which type of missile? So this Agni-4, this is a intercontinental ballistic missile, and it was India that has successfully tested this Agni-4 missile from the ITR in Chandipur, Odisha. This Agni-4, this is a surface-to-surface ballistic missile that has a range of 4,000 kilometers. Next, which shipbuilding company has recently launched two indigenously designed and constructed anti-submarine warfare shallow watercraft named the INS Malpe and INS Mulki? So which is that shipbuilding company? It is Cochin Shipyard Limited that has developed this 4th and 5th of the 8 anti-submarine warfare shallow watercraft project. 4th is INS Malpe and the 5th is INS Mulki. Next, name the military exercise between India and USA that has recently commenced at the Foreign Training Node in Rajasthan. What is the name of that exercise? The exercise is Yudh Abhyas, right? And it will run till 22nd of September 2024. This is the 19th edition of this Yudh Abhyas exercise held in
Alaska, USA. Right? I repeat, this the 19th edition. I repeat, one more thing, correction here. The 19th edition of Yuddha Abhyas was held in Alaska, USA. But this time, this is the 20th edition of this exercise that we are talking about, that was held where? In Rajasthan. Next, which defense company has recently signed a contract worth 26,000 crore rupees with the Ministry of Defense for the procurement of 240 AL-31FP aero engines for Sukhoi 30 Mark 1 aircraft of the Indian Air Force? So, which is the defense company? It is Hindustan Aeronautics Limited. Next, name the country where Indian Navy's P-8I aircraft recently reached to participate in the 16th edition of exercise Kakandu. So, what is the country where Indian Navy's aircraft reached? It is Australia. Right? Then in this exercise, more than 3,000 personals over 32 nations took part. Next is name the missile that the Indian Navy and DRDO successfully tested in flight from the launchpad of the ITR in Chandipur off the coast of Odisha. What is the name of that missile? That is VLSRSCM. That is Vertical Launch Short Range Surface to Air Missile. Next is name the joint exercise that was recently conducted between Indian Air Force and Royal Oman Air Force in Oman. What is the name of that exercise? The exercise is Eastern Bridge. And this bilateral exercise began on 11th of September and it will end on 22nd of September. Also remember the 5th edition of Al-Naja exercise held between Indian Army and Royal Army of Oman. Right? So air exercise is Eastern Bridge and the exercise between the armies is Al-Naja. Next, Ministry of Defense, they approved the Indian Navy's 2,500 crore rupees plan to develop what? It was to develop the extra large unmanned underwater vessel. The vessels are expected to strengthen India's defense against enemy submarines and surface vessels. Next, which city has recently hosted the Indian Defence Aviation Expo, that is IDAX 2024? So it is Jodhpur, Rajasthan, where this Jodhpur, Rajasthan, that is Jodhpur is the city where it hosted the Indian Defence Aviation Expo 2024. Also, Tarang Shakti exercise was concluded here. Tarang Shakti is one of the largest India's first multinational air exercise hosted by our Indian Air Force. Next, name the state-of-the-art Kalvari submarine escape training facility that was recently commissioned by the Indian Navy at INS Satwana in Visakhapatnam, Andhra Pradesh. So, recently, what is the name of that facility? It is Vinitra. Next is students science and technology. Which company has recently launched Sentinel-2C satellite aboard last Vega rocket for environmental monitoring? The name of the company is Ariana Space. This satellite, it will serve as the Earth observation satellite for the European Union, which will provide important data for the environmental, correct, or we can say important data for the environment monitoring. Next, name the India's first space station which will be launched by 2028 by ISRO. So India's space station, it is Bharatiya Antariksh Space Station, and the entire setup will have 5 modules. First module will be launched in 2028 and it is expected by 2035 India will have our own space station. Next, which company has recently announced plans to set up India's first multi-sensor all-weather high revisit Earth observation satellite constellation? What is the name of that organization? It is Naib Space Private Limited. Right? It aims to promote India's defense and space capabilities that will promote self-reliance in the defense sector. And also you will be seeing with this in the coming 5 to 6 year 40 low Earth orbit satellites will have, or the constellation will have 40 to 50 satellites here in the next 5 to 6 years. Next, name the SpaceX crew mission that has recently led by an American billionaire entrepreneur Jared Isaacman returned to Earth following the successful completion of the world's first private spacewalk. So who did the first private spacewalk? Jared Isaacman. Right, he led this mission and it is the mission of spacewalk. Question asked here is that what is the name of that SpaceX crew mission? So the mission's name is Polaris Dawn. Next, which country has recently launched the Chandrayaan-1 research satellite into orbit by QM-100 satellite carrier? So this both
Chamran-1 satellite and QM-100 satellite carrier. It is of Iran. Right, this Chamran-1 satellite, it weighs around 60 kilograms and it is designed to test the hardware and software for orbital maneuver technology. Next, according to a recent study from USA-based Cornell University, the first human-made meteor shower may occur from the rocket debris left over from NASA's which mission? So it has been left over from NASA's Double Asteroid Redirection Test Mission. Right? Next is which aerospace company has recently launched Project 200, an innovative satellite designed to operate at an ultra low Earth orbit. So what is the name of that aerospace company? The company is Bellatrix Aerospace Private Limited. Next, name the rocket that was launched by China from a sea platform on the waters near the city of Hyang to place 8 satellites into planned orbit. The name of that rocket is Geelong 3. Next is student our homework section. First is tell me Gharchola Sari. This is the product that recently got the GI tag from which state? Then second, Kolkata International Film Festival has announced which country as the focus country? Important question and we discussed this in class. Then the third question is tell me recently which platform was launched to optimize the public distribution system supply chain in India? What is the name of that portal? So these are your homework questions, students. If you find the session interesting, do hit the like button. I want to see maximum likes here. Like all those students who have watched this video and उन्हें पसंद आया हमारा session, then do hit the like button. Now let's move to the Hindi segment of this video, students. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम 9 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। हम डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सुबह 5 बजे रेगुलरली अपलोड कर देते हैं स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया की पहली स्टेट जिन्होंने इंटीग्रेट किया फॉरेस्ट इकोसिस्टम को इनटू द ग्रीन जीडीपी। देन हम बात करेंगे इंडिया और मलेशिया का पहला इनॉग्रल सिक्योरिटी डायलॉग हुआ, राइट। देन हम बात करेंगे मेक इन इंडिया की ट्रेन सेट, राइट, जो कि इंडिया की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन यहाँ पे बनाई गई, मेक इन इंडिया के अंडर इसको बनाया गया है। देन हम बात करेंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस से रिलेटेड। नेक्स्ट थिंग हम बात करेंगे अभी एमडी ऑन क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग ये रिलीज़ की गई है, ये क्या है, आरबीआई के द्वारा क्या यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलीज़ किए गई हैं। देन सेबी की बात करेंगे, इन्होंने ईज कर दिया सेटलमेंट नॉर्म्स फॉर द इनएक्टिव ब्रोकरेज अकाउंट्स। तो इन सभी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड मैनी मोर थिंग्स टू डिस्कस इन दिस वीडियो। एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा। ऑल्सो स्टूडेंट्स हम वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स एंड टॉपिक वाइज रेगुलरली अपलोड करते हैं जिससे आपकी लर्निंग में कोई कमी ना आए। ऑल्सो अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स। एंड स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, राइट, एंड आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो एंड लेट देम नो अबाउट दिस इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म। Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. चलिए स्टूडेंट्स, नेशनल अफेयर्स से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, ये है अश्विनी वैष्णव जी। ये हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के।
मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इन्होंने अश्विनी वैष्णव जी ने अभी गवर्नर ऑफ असम जो कि हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ असम हिमंता बिश्वा शर्मा जी, इनके साथ मिलकर अभी NIELIT डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी को यहाँ पे इनॉग्रेट किया एट 12 लोकेशंस इंक्लूडिंग 5 लोकेशंस इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। एंड ये जो इवेंट था जहाँ पे इन्होंने ये इनॉग्रेट किया, ये कहाँ पर था? गुवाहाटी में था, गुवाहाटी असम में था, राइट। यहाँ पे बेसिकली जो आपकी ये NIELIT, राइट, ये क्या है? सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म जान लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट। ये ओनली यूनिवर्सिटी है जो MEITY के अंडर आती है। 1994 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था एंड इसका मेन एम क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। इनका एम है कि हम 3.7 मिलियन स्टूडेंट्स को ट्रेन करें इन एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज ओवर द नेक्स्ट 5 years and it follows the National Education Policy 2020 जिसका फोकस रहेगा ऑन मेकिंग एजुकेशन मोर accessible, flexible and relevant to the industry needs। ठीक, सबसे पहली चीज़ तो ये याद रखेंगे। इसी के अलावा एक और चीज़ याद रखेंगे, अभी रिसेंटली NIELIT, राइट, इन्होंने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु कर्नाटका बेस ये है, इन्होंने इनके साथ एक MOU साइन किया है ताकि जो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो स्किल्स हैं वो यहाँ पे लोगों तक पहुँचाई जा सके, उसका एक प्रॉपर इकोसिस्टम बनाया जा सके। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड की बात करूँ तो हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा? बेंगलुरु कर्नाटका। नेक्स्ट आ जाते हैं अमित शाह जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा भारत पोर्टल को लॉन्च किया है। ये भारत पोर्टल बेसिकली क्या है कि इंटरनेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन में यहाँ पे ये एक रेवोल्यूशन लाने का काम करेगा। जैसे अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल ए पर्सन है, इन्होंने इंडिया में कोई क्राइम करा, इन्होंने कोई करप्शन करा एंड ये बाहर चले गए, किसी दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो गए फिर इंडिया से, तो यहाँ पर इंडिया में करेक्ट इंडिया की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज यहाँ पे टाई अप करेंगी विद इंटरपोल ताकि ये जो ए पर्सन है जिन्होंने यहाँ पे क्राइम किया है उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके एंड उनको जो बाहर वो रिजाइड कर रहे हैं उनको वापस भारत लाया जा सके एंड वहाँ पर उन पे केस प्रॉपर उनकी इन्वेस्टिगेशन की जा सके। करेक्ट, इस पोर्टल को डेवलप किया गया है CBI के द्वारा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो CBI यहाँ पे इंटरपोल के साथ मिलेगी, राइट, उनके साथ बाहर की जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी उन पर्सन पर जो वहाँ पे क्राइम करके गए हैं उनके साथ टाई अप कर राइट, यहाँ पे रियल टाइम शेयरिंग रहेगी इन्फॉर्मेशन की एंड बेटर यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन रहेगी आपके लॉ की। करेक्ट, यहीं पे आप देखेंगे इससे क्या होगा, सेंटर, स्टेट, यूनियन टेरिटरीज एंड जो आपकी लीगल एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके बीच में जो कोलैबोरेशन है वो बेटर होगा एंड इससे जो है फाइनेंशियल फ्रॉड, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इनमें काफ़ी ज़्यादा रोक देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडिया की पहली स्टेट जो कि इंटीग्रेट करेगी फॉरेस्ट इकोसिस्टम को इनटू ग्रीन GDP, राइट। बेसिकली आपका क्या है कि जो छत्तीसगढ़ है ना, इसमें 44% जो लैंड है वो फॉरेस्ट एरिया है। करेक्ट, लैंड का 44% एरिया यहाँ पे आपका फॉरेस्ट है। अब इससे क्या होता है, तो मतलब छत्तीसगढ़ स्टेट में काफ़ी इम्पैक्ट रहता है फॉरेस्ट का, राइट। फॉरेस्ट क्या है, ये कार्बन सिंक का भी काम करता है कि पॉल्यूशन को कम करने के लिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे छत्तीसगढ़ चाहता है कि अब हम अपने फॉरेस्ट का जो हम कंट्रीब्यूशन है उसको भी यहाँ पर हम अपनी ग्रीन GDP में इंक्लूड करके अपनी GDP के ऊपर बात करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ के इन फॉरेस्ट से काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स हैं जो रूरल इकोनॉमी को ग्रो करती हैं, जैसे टेंडू लीव्स, लैक, हनी, मेडिसिनल प्लांट्स, ये यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट काम करती हैं एक इकोनॉमी को ग्रो करने में। वहीं जो फॉरेस्ट है वो एक कार्बन सिंक का भी काम करता है जिससे हमारा इन्वायरमेंट साफ रहता है। तो इन सभी चीज़ों को, बेनिफिट्स को आपका ग्रीन GDP से जोड़ने की बात की गई ताकि बेटर पॉलिसीज यहाँ पे बनाई जा सकें, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस किया जा सके एंड वहीं आपका जो स्टेट की इकोनॉमिक प्लानिंग है उसमें भी इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आगे ग्रो किया जा सके। ग्रीन GDP क्या है, बेसिकली कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हों लेकिन आपके जो इन्वायरमेंटल कॉस्ट है उसको ध्यान में रखते हो, राइट। इन्वायरमेंट पे जो इफेक्ट हो रहा है उसको ध्यान में रखते हो। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या रहेगी, रायपुर। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन रहेंगे, विष्णुदेव साय। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडिया एंड मलेशिया। ये वो पहला सिक्योरिटी डायलॉग इनके द्वारा किया गया ताकि स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल कोऑपरेशन। अब देखो, इंडिया पहला है तो मतलब हम ये कह सकते हैं इनॉग्रल सिक्योरिटी डायलॉग रहेगा, न्यू दिल्ली में हुआ था ये, राइट। जिससे क्या होगा, इन दोनों कंट्रीज के बीच में जो कोलैबोरेशन है वो बढ़ेगा। एक दूसरे की कंट्री में यहाँ पे हम काम करेंगे ताकि टेररिज्म को रोक सकें, साइबर सिक्योरिटी को बढ़ावा दिया जा सके, डिफेंस में काम किया जा सके, मैरिटाइम सिक्योरिटी में काम किया जा सके एंड एक दूसरे के ट्रेड में फ्लरिश कर सकें। क्योंकि अगर हम देखें तो मलेशिया इंडिया का 13 लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है इन द वर्ल्ड एंड तीसरा इन द एशियन मेंबर्स,
राइट। वहीं याद रखेंगे 2023 में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का पहला रीजनल ऑफिस कहाँ पर, कुआलालंपुर मलेशिया में। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं फिर टीटागढ़ रेल, इन्होंने डिलीवर किया इंडिया का पहला ड्राइवरलेस मेक इन इंडिया ट्रेन सेट टू बेंगलुरु मेट्रो। राइट, तो ये ड्राइवरलेस है, मतलब ये ऑटोमेशन पे काम, ऑटोमेटेड रहेगा, राइट, खुद वर्क करेगा। तो ये है इंडिया का पहला ड्राइवरलेस मेक इन इंडिया ट्रेन सेट, बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को ये डिलीवर किया गया, राइट, टीटागढ़ रेलवेज के द्वारा। ये जो टीटागढ़ रेल सिस्टम है, राइट, ये कहाँ पे बना रहा है इस ट्रेन सेट को, तो ये बना रहा है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, ऑटोमेटेड रहेगा, स्टेनलेस स्टील को यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, ठीक, मार्क करेंगे। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पे। GEAPP क्या है, ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट। इन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ अभी पार्टनर किया ताकि इंडिया का जो ग्रीन एनर्जी फ्यूचर है उसके ऊपर काम किया जा सके। देखो, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एम ही ये है कि जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं एंड जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी हेल्प की जा सके, ताकि क्योंकि वहाँ पे अभी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हर जगह पे जो बैकवर्ड एरियाज़ है वहाँ पे भी बिजली पहुँच सके। तो उन जो बैकवर्ड एरियाज़ में इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाने का काम करने के लिए, क्योंकि सोलर पैनल्स लगे और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, तो ये गेम चेंजर रहेगा वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए, करेक्ट। एंड इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट पे भी पॉल्यूशन फ्री रहेगा। तो इन्होंने पार्टनर किया इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ ताकि जो इंडिया का ग्रीन एनर्जी फ्यूचर है उसके ऊपर फोकस किया जा सके। यहीं पर अगर आप देखेंगे, इंडिया का भी टारगेट है कि हम 500 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी को अचीव कर सकें बाय 2030। इसी के अलावा कुछ और यहाँ पे इनिशिएटिव्स देखने को मिलेंगे, जैसे मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड। ये एक ट्रस्ट फंड सेटअप किया गया है जिसका एम है कि $100 मिलियन रेज करना ताकि इंडिया के सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया जा सके। सेकंड आ जाता है ड्यूएट, जो कि है डिजिटलाइजेशन ऑफ यूटिलिटीज फॉर एनर्जी ट्रांजिशन। ये जो ड्यूएट प्रोग्राम है ये फोकस करेगा ऑन मॉडर्नाइजिंग इंडियाज ग्रिड सिस्टम टू क्रिएट डिजिटल डाटाबेस ऑफ ग्रिड एसेट्स इंक्लूडिंग देयर लोकेशंस एंड स्पेसिफिकेशंस। फिर आ जाता है थर्ड, एंटाइज 2.0। ये प्लेटफॉर्म इज सेट टू लॉन्च इन जनवरी 2025 एंड वाज डिजाइन टू सपोर्ट द स्टार्टअप्स बाय ऑफरिंग फंडिंग, मार्केट एक्सेस, मेंटरशिप टू स्केल इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर इंडियाज क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। नेक्स्ट आ जाते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अभी रिसेंटली मास्टर डायरेक्शंस रिलीज़ की गई हैं ऑन क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्टिंग। देखो, ये बेसिकली क्या है कि अगर यहाँ पे कंपनीज जो बैंक्स हैं, जो एनबीएफसीज हैं, राइट, उनके पास प्रॉपर डाटा होगा, अगर कोई पर्सन लोन लेना चाहता है उनके प्रॉपर हिस्ट्री होगी, क्रेडिट हिस्ट्री होगी कि उनकी क्या ट्रांजैक्शंस रही हैं, राइट, उनके बिजनेसेस में क्या टर्नओवर रहा है, वो कितना अर्न कर रहे हैं, क्या उनकी स्पेंडिंग पावर है, राइट, कितना अमाउंट का वो लोन ले सकते हैं कि वो वापस चुका पाएँ। क्योंकि अगर वो फ्री में पैसे बांटते रहेंगे ना, तो ये सारे यूज़र्स जो लोन लेंगे वो एनपी हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे यूज़र्स ऐसे होंगे जो पैसा वापस नहीं कर पाएंगे, राइट, अगर बिना चेकिंग के यहाँ पे लोन दिया जाएगा। एनपी होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो बन जाएंगे, करेक्ट। तो जब आप लोन भी लेते हैं ना, तो आपका क्रेडिट रिपोर्ट चेक होती है, राइट, आपका सिविल स्कोर चेक होता है। तो वो ये सारी चीज़ दर्शाता है कि आप स्पेंडिंग पावर कितनी है, आप कितना पैसे को ढंग से यूज़ कर रहे हैं, राइट। अगर आपकी सैलरी आ रही है या फिर आपका बिजनेस है तो उसकी क्या ट्रांजेक्शन्स हैं, कितनी आपकी सैलरी आ रही है, करेक्ट, या फिर क्या आप कितना टर्नओवर कर रहे हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज, इनको रिक्वायर्ड टू नोटिफाई द कस्टमर्स वाया एसएमएस या फिर ईमेल कि उनकी क्रेडिट रिपोर्ट चेक हो रही है। एंड क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे बैंक एंड एनबीएफसीज आ जाएंगे, उनको कस्टमर को रीजंस बताना पड़ेगा कि क्यों उनका जो डाटा रिजेक्ट हुआ है या फिर क्या उनको करेक्शन यहाँ पर अपने डाटा में करने चाहिए। इसी के अलावा क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज की बात करें तो ये कलेक्ट कर सकती हैं पब्लिक डाटा, क्रेडिट ट्रांजेक्शंस को, पेमेंट हिस्ट्रीज को ऑफ पीपल एंड बिजनेस, mainly for loans and credit cards. They collect data from banks and financial institutions, lenders and other credit rating agencies, ताकि वो एक क्रेडिट रिपोर्ट यहाँ पे बना सके ताकि फर्दर उस पर्सन के लिए ईजी हो सके या फिर डिफिकल्ट हो सके टू टेक अ लोन। नेक्स्ट आ जाते हैं सेबी, इन्होंने ईज कर दिया सेटलमेंट नॉर्म्स को फॉर इनएक्टिव ब्रोकरेज अकाउंट, राइट। तो इन्होंने जो ये ईज किया है, ये सेटलमेंट नॉर्म्स है फॉर ब्रोकरेज अकाउंट जो कि इनएक्टिव थी फॉर 30 कैलेंडर डेज। इससे क्या होगा, जो आपका इनएफिशिएंसीज हैं ब्रोकर्स के द्वारा, करेक्ट, कि उनको जो सेटलमेंट करनी है डेली, उसमें यहाँ पे ईज देखने को मिलेगा, करेक्ट। एंड इससे क्या होगा, इट विल टेक इफेक्ट इमीडिएटली, रिप्लेसिंग सेबीज अगस्त 2024 डाटा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क, राइट। इन्होंने डेफर कर दिया लेंडर्स को टू 3 बोरोवर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2025, राइट। पहले 4 बोरोवर्स से आप लोन ले सकते थे, उसको फिर सरकार के इनके द्वारा बोला कि आप 3 पर बोरोवर हो सकता है, राइट, नंबर ऑफ लेंडर्स टू 3 पर बोरोवर। ये 1 जनवरी 2025 से लागू होना था, बट अब इसको पोस्टपोन कर दिया है और ये 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। इससे क्या होगा कि ज़्यादा लोन ना बढ़े किसी इंडिविजुअल पे या किसी भी कंपनी पर, करेक्ट।
नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाते हैं बैंकिंग एंड इकोनॉमी एंड बिजनेस पर। तो इंडिया की अभी जीडीपी, अभी एक एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये आपका किसके अंडर आ जाता है, MEITY के अंडर, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आता है। इनके द्वारा भी एक फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट ऑफ एनुअल जीडीपी रिपोर्ट रिलीज की गई फॉर FY25, जिसमें इन्होंने बताया कि इंडिया का जो एक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रहेगा FY25 में वो रहेगा 6.4% का। अगर FY24 में देखें तो ये 8.2% था और ये गिरकर अब 6.4% एक्सपेक्टेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहीं पे अगर मैं रियल जीडीपी की बात करूँ तो 6.4%, और ये 4 ईयर लो रहेगा, मतलब पिछले 4 सालों में सबसे कम ग्रोथ देखने को मिलेगी इस साल। इसी के अलावा अगर मैं नॉमिनल जीडीपी की बात करूँ तो 9.7% का यहाँ पे FY25 में ग्रोथ रहेगी। जीवीए की ग्रोस वैल्यू एडेड की बात करूँ तो 6.4% की इन FY25 ग्रोथ देखने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है, देखो अभी यहाँ पे ये था एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा ये ग्रोथ प्रोजेक्ट की गई। अब एसबीआई ने भी एक ग्रोथ प्रोजेक्शन किया है कि इंडिया 6.3% से ग्रो करेगा इन FY25। नेक्स्ट आ जाते हैं CIL, जो कि है कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता वेस्ट बंगाल रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर ही आता है। इन्होंने अभी एक नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट साइन किया है IREL के साथ। IREL क्या है, इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड। ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, राइट। इससे क्या होगा बेसिकली, आपका इस पार्टनरशिप से जो आपकी ग्रोथ रहेगी, राइट, इन दिस क्रिटिकल मिनरल्स, उसके ऊपर काम किया जाएगा। और हम जानते हैं क्रिटिकल मिनरल्स हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। तो इनकी माइनिंग के लिए, राइट, इनके एक्सट्रैक्शन के लिए, करेक्ट, इसके आपके रिफाइनिंग के लिए ऑफ दीज मिनरल्स, राइट, यहाँ पे ये पार्टनरशिप की जाएगी, जिससे आपका सेक्टर्स जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, राइट, बैटरीज, आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डिफेंस इंडस्ट्रीज, फार्माक्यूटिकल सेक्टर्स, इसमें यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगी। एंड इनको कैसे आगे बढ़ना है उसके ऊपर प्रॉपर फ्रेमवर्क भी बनाया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी बेंगलुरु कर्नाटका बेस्ड टाटा एलेक्सी रहेगी। ये एक ग्लोबल डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर है। इन्होंने CSIR, जो कि है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इनके आर्म नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के साथ यहाँ पे पार्टनर किया ताकि एडवांस एयर मोबिलिटी के ऊपर काम किया जा सके। एयर मोबिलिटी बेसिकली आप क्या आ जाते हैं, सिंपल टर्म्स में बोले तो ड्रोन्स, जैसे अनमैन्ड एरियल व्हीकल, वर्टिकल एंड टेक ऑफ एंड लैंडिंग, देन आपका अर्बन एयर मोबिलिटी। तो इनके ऊपर यहाँ पे काम करने के लिए, इस सेक्टर को ग्रो करने के लिए, राइट, ये पार्टनरशिप की गई, जिसमें हम देखेंगे नई टेक्नोलॉजी जैसे AI, मशीन लर्निंग, इन सबको यूज़ किया जाएगा एंड इनोवेशन को फास्ट ट्रैक करने का यहाँ पे काम किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर CCI अप्रूवल्स पर। पहला देखा जाए तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक होली ओन्ड सब्सिडरी है टाटा सन्स की, ये एक्वायर करेंगे मेजर स्टेक इन एप्पल्स कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर पेगाट्रॉन टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। देन दूसरा आ जाता है जेंट्री रिन्यूएबल्स इंडिया मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, दे एक्वायर करेंगे 21 स्पेशल पर्पज व्हीकल्स ओनिंग रिन्यूएबल पावर जनरेशन प्लांट्स एंड सो ऑन। देन थर्ड आ जाता है USA बेस्ड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म CA कैरोब इन्वेस्टमेंट, ये एक्वायर करेंगे 68.9% स्टेक रूप ऑटोमोटिव्स लिमिटेड। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर। अभी ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 3-1 से हरा दिया टू विन द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आफ्टर 10 ईयर्स, राइट। 10 साल में पहली बार यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने ये जीता है। अगर मैं बात करूँ लोकेशन कहाँ पर हुआ था इसका, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिला था। अभी आपने देखा होगा न्यूज़ में भी, सोशल मीडिया में भी चल रहा था कि इंडिया की टीम, इवन विराट कोहली की काफ़ी खटपट हुई थी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की मीडिया के साथ, राइट, इवन फैंस के साथ वहाँ पे बड़ी खटपट हुई थी। सो कमिंग बैक, वो थी आपकी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी एंड ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 3-1 से यहाँ पे हरा दिया है। यहीं पे एक चीज़ याद रखेंगे, जसप्रीत बुमराह ये प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे फॉर दिस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। नेक्स्ट आ जाते हैं अर्थ रोटेशन डे। 8 जनवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं। क्यों ऑब्जर्व करते हैं? क्योंकि 8 जनवरी को यहाँ पर एक साइंटिस्ट होते थे, फ्रेंच साइंटिस्ट, उन्होंने डिस्कवर किया था अबाउट द अर्थ रोटेशन। वो थे लियोन फोकॉल्ट, राइट। इन्होंने साइंटिफिक डेमोन्स्ट्रेशन किया था 1851 में अबाउट अर्थ रेवोल्यूशन एंड यहाँ पे 8 जनवरी को 2025 में 174th बर्थ एनिवर्सरी हमने इनकी ऑब्जर्व करी। करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ दिस। यहीं पे अगर हम देखें स्पिनिंग ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस, इसको रोटेशन बोलते हैं। 23 घंटे 56 मिनट का एक फुल रोटेशन होता है एंड उसको राउंड ऑफ करके हम 24 कर देते हैं। अगर हम बात करें फुल रोटेशन की, इसको हम अर्थ डे के नाम से भी जानते हैं एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डे एंड नाइट साइकिल्स। वहीं पे अर्थ कहाँ से कहाँ रोटेट करती है? वेस्ट से ईस्ट रोटेट करती है और जो सन और मून हमें लगता है अपेयरिंग ईस्ट टू वेस्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम स्टेट न्यूज़ की बात करेंगे। अभी कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया, आप इनको यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, इन्होंने लॉन्च किया एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम।
राइट। ये हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो लॉन्च की गई है ना, ये कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के एम्प्लॉयज़ के लिए की गई है और इसका नाम रखा गया है कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन आरोग्य, राइट। ये हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की गई है। यहाँ पे 650 रुपये हर महीना जो आपके कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के एम्प्लॉयज़ हैं उनके अकाउंट से कटेंगे एज अ इंश्योरेंस, एज अ प्रीमियम के तौर पर, राइट। एंड इससे क्या होगा, 1.5 लाख पीपल जो कि यहाँ पे आपके इंक्लूडिंग 34,000 एम्प्लॉयज़ एंड इनके जो डिपेंडेंट्स हैं उनको यहाँ पे आप देखेंगे उनकी फैमिलीज़ को यहाँ पर इंश्योरेंस प्रोवाइड कराने का ये काम करेगा। इसमें आपका आई केयर, डेंटल, आयुर्वेदिक, प्राकृतिक, यूनानी एंड होम्योपैथी ये सारी चीज़ें कवर रहेंगी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर जिससे आपकी लर्निंग और बेटर होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं उस प्रोजेक्ट का नाम बताओ जो कि लॉन्च किया गया इंडियन आर्मी के द्वारा टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड सर्विसेज टू द डिफेंस पेंशनर्स, वेटरन्स एंड देयर फैमिलीज। तो उस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट नमन एंड ये स्पर्श के ऊपर काम करेगा। स्पर्श क्या है, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षक, एंड इसके लिए जो भी टेक्नोलॉजी है HDFC बैंक के द्वारा यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी साइन किया एक एयर फ्रेमर कॉन्ट्रैक्ट सफल हेलीकॉप्टर इंजन प्राइवेट लिमिटेड के साथ ताकि अरावली नाम का एक हेलीकॉप्टर इंजन को डेवलप किया जा सके। तो ये कॉन्ट्रैक्ट, एयर कॉन्ट्रैक्ट जो ये है आपका एयर फ्रेमर कॉन्ट्रैक्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा साइन किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं उस बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज का नाम बताओ बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस जो कि मेडिटेरियन सी में हुई 2 से 4 सितंबर के बीच में। एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज वरुणा, राइट। एंड ये 22वीं एडिशन रहेगी इस एक्सरसाइज की, मार्क करेंगे 2 से लेके 4 सितंबर तक हुई। इंडिया एंड फ्रांस के बीच में ये एक्सरसाइज हमें देखने को मिली एंड इंडिया से INS ताबर का यहाँ पर पार्टिसिपेशन देखने को मिला। नेक्स्ट, उस एरोस्पेस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने अचीव किया सक्सेसफुल मेडन फ्लाइट ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस अनमैन्ड बॉम्बर एयरक्राफ्ट FWD-200B। अनमैन्ड है और डायरेक्टली आप नीचे से ऑपरेट कर सकते हैं रिमोटली इसको। FWD-200B ये आपका बॉम्बर का नाम रहेगा। पूछा जा रहा है किस एरोस्पेस कंपनी के द्वारा अचीव किया गया इसका फ्लाइंग टेस्ट, सक्सेसफुल फ्लाइंग टेस्ट। तो ये है फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट, अभी इंडिया ने सक्सेसफुली लॉन्च किया अग्नि 4 मिसाइल को फ्रॉम ITR इन चांदीपुर ओडिशा। जो ये अग्नि 4 है ये किस टाइप की मिसाइल है, तो ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिंग मिसाइल है। 4000 किलोमीटर तक की इसकी रेंज रहेगी। सरफेस टू सरफेस मिसाइल ये रहने वाली है। नेक्स्ट, किस शिप बिल्डिंग कंपनी ने अभी 2 इंडिजीनियसली डेवलप्ड एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट को डेवलप किया, 4th एंड 5th। 8 ऐसे रहेंगे जिसमें से 4th एंड 5th ये रहेंगे। 4th है INS मालपे एंड 5th है INS मुल्की। ठीक है, पूछा जा रहा है किस शिप बिल्डिंग कंपनी ने, तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा ये यहाँ पे लॉन्च किए गए। नेक्स्ट आ जाते हैं उस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम बताओ जो कि इंडिया एंड USA के बीच में कंडक्ट कराई गई एट द फॉरेन ट्रेनिंग नोड इन राजस्थान। राजस्थान में ये एक्सरसाइज हुई है। एक्सरसाइज का नाम क्या रहेगा, युद्ध अभ्यास, राइट। एंड युद्ध अभ्यास का ये है 20वां एडिशन। अगर मैं बात करूं 19वें एडिशन की, तो 19वां एडिशन हमें देखने को मिला था अलास्का में। अलास्का कहां पर है, USA में। नेक्स्ट, किस डिफेंस कंपनी ने अभी रिसेंटली एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, 26,000 करोड़ का ये कॉन्ट्रैक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ ताकि 240 AL-31FP एरो इंजन को प्रोक्योर किया जा सके सुकोई 30 Mark 1 एयरक्राफ्ट के लिए ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। तो किस डिफेंस कंपनी ने ये साइन किया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। नेक्स्ट, नेम द कंट्री वेयर इंडियन नेवीज P-8I एयरक्राफ्ट ये अभी पहुंचा वहां पर ताकि 16वें एडिशन ऑफ एक्सरसाइज काकांडू में पार्टिसिपेट किया जा सके। तो एक्सरसाइज काकांडू ऑस्ट्रेलिया में हो रही है। 3000 से भी ज्यादा यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हमें पर्सनल देखने को मिल रहे हैं 32 नेशन से जो इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेक्स्ट, उस मिसाइल का नाम बताओ ऑफ द इंडियन नेवी एंड DRDO जिन्होंने सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज इन चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा। तो उस मिसाइल का क्या नाम है, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। नेक्स्ट, उस जॉइंट एक्सरसाइज का नाम बताओ जो कि इंडियन एयरफोर्स एंड रॉयल ओमान एयरफोर्स के बीच में कंडक्ट की गई। देखो अगर एयरफोर्स की बात की जा रही है तो ये एक्सरसाइज का नाम क्या रहेगा, ईस्टर्न ब्रिज, राइट। यहीं पे अगर मैं बात करूं आर्मी की, इंडियन आर्मी एंड रॉयल ओमान आर्मी के बीच में जो एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई उसका नाम है अल नजा एंड ये अल नजा का याद रखेंगे 5th एडिशन रहेगा इस एक्सरसाइज का। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रूव किया इंडियन नेवी का 25,000 करोड़ रुपए का प्लान टू डेवलप व्हाट। तो इन्होंने प्लान अप्रूव किया टू डेवलप एक्स्ट्रा लार्ज अनमैन्ड अंडर वाटर वेसल को।
नेक्स्ट, किस सिटी ने रिसेंटली होस्ट किया इंडियन डिफेंस एविएशन एक्सपो को? तो जोधपुर राजस्थान में ये आपका इंडियन डिफेंस एविएशन एक्सपो को यहाँ पे अभी ऑर्गेनाइज कराया गया, और सिटी कौन सी है? जोधपुर। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ द आर्ट कलवरी सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी अभी इस्टेब्लिश की गई थी, कमीशन की गई थी INS सातवाहना विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। उस फैसिलिटी का नाम बताओ, स्टेट ऑफ द आर्ट कलवरी सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी। तो वो है विनित्रा। ठीक है, तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के डिफेंस क्वेश्चंस। अब आ जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। अभी रिसेंटली किस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया सेंटिनल 2C सैटेलाइट यूजिंग लास्ट वेगा रॉकेट ऑफ एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए? एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए ये एरियाना स्पेस के द्वारा लॉन्च की गई थी, एंड ये सैटेलाइट आपका बेसिकली यूरोपियन यूनियन का जो एनवायरमेंट है उसको स्टडी करने का काम करेगी, उससे क्रूशियल डाटा एनवायरमेंट से रिलेटेड ये लाएगी। नेक्स्ट, नेम इंडिया का पहला स्पेस स्टेशन जो कि इसरो के द्वारा लॉन्च करने की बात की गई, जिसका पहला मॉड्यूल 2028 में लॉन्च किया जाएगा, तो उसका नाम है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। 2035 तक बनके ये रेडी हो जाएगी और इसके 5 मॉड्यूल्स यहाँ पे लॉन्च किए जाएंगे, जिसमें से जो पहला मॉड्यूल है वो 2028 में लॉन्च किया जाएगा। तो इंडिया के पास भी अपना खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होगा। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने रिसेंटली अनाउंस किया प्लान टू सेटअप इंडिया का पहला मल्टी सेंसर ऑल वेदर हाई रिविजिट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन को? तो वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नाइब स्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ये लॉन्च किया गया, एंड इसके अंदर हम देखेंगे कॉन्स्टेलेशन के अंदर 40 लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाएगा आने वाले 5 से 6 सालों में। नेक्स्ट, उस स्पेसएक्स के क्रू मिशन का नाम बताओ जो कि पहला वर्ल्ड का पहला प्राइवेट स्पेस वॉक ये मिशन था। जेरेड आइसेकमैन जो कि एक बिलियनर एंटरप्रेन्योर है, उनके द्वारा इसको सक्सेसफुली यहाँ पे लॉन्च किया गया था। तो इस मिशन का नाम क्या है स्पेसएक्स के? पोलारिस डॉन। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वर्ल्ड का पहला प्राइवेट स्पेस वॉक था ये। ठीक है, नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली लॉन्च किया चैमरन 1 रिसर्च सैटेलाइट को इनटू ऑर्बिट बाय क्वेम 100 सैटेलाइट कैरियर? तो ईरान के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है ये चैमरन 1 रिसर्च सैटेलाइट को, जो कि क्वेम 100 सैटेलाइट कैरियर की मदद से ये लॉन्च किया गया। तो दोनों पूछे जाएं क्वेम 100 या फिर चैमरन 1, तो ये ईरान के रहेंगे। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडी फ्रॉम USA बेस्ड कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, जो पहला ह्यूमन मेड मीटियोर शावर है ये अकर हो सकता है फ्रॉम रॉकेट डेब्रिस लेफ्ट ओवर फ्रॉम नासाज विच मिशन? तो नासा के कौन से मिशन से? डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट से उनका जो ये मिशन था, राइट, GART डार्ट मिशन, DART, राइट। इस मिशन से जो वो टकराया था एस्ट्रॉयड पर, उससे जो लेफ्ट ओवर्स हैं, राइट, वो यहाँ पे एज अ फर्स्ट ह्यूमन मेड मीटियोर शावर की तरह लैंड कर सकते हैं, एंड इट विल बी अ क्वाइट अ व्यू टू सी। ठीक, नेक्स्ट है, किस एरोस्पेस कंपनी ने भी लॉन्च किया प्रोजेक्ट 200, एक इनोवेटिव सैटेलाइट डिजाइन टू ऑपरेट एट एन अल्ट्रा लो अर्थ ऑर्बिट? तो किस एरोस्पेस कंपनी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है? तो वो है बेलेट्रिक्स एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट होमवर्क। पहला होमवर्क है आपका, अभी रिसेंटली 16th कॉप ऑफ द UNCCD कहाँ पर हुई थी? लोकेशन बताओ। सेकंड, किस सिटी ने या किस स्टेट ने होस्ट किया वर्ल्ड मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस को? वर्ल्ड मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस 2024 को किस स्टेट ने होस्ट किया? थर्ड, अभी रिसेंटली कौन सी कंट्री चेयर करेगी कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग? राइट, उस कंट्री का नाम बताओ। तो दोस्तों ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चन है। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक चाहिए मुझे इस वीडियो पे। जैसे आपने परसों अपना प्यार दिखाया, आपने मेरे को रिस्पेक्ट किया, मैंने आपको बोला था, राइट, आज भी मैं चाहता हूँ बच्चों, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है ना, आप ज़्यादा से ज़्यादा डेली लाइक कीजिए एंड होमवर्क को ज़रूर अटैम्प्ट कीजिए। करेक्ट, होमवर्क अटैम्प्ट करने से क्या होगा, एक तो आपकी रिवीजन होती रहेगी चीज़ों की जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कई चीज़ें क्या होती हैं कि मान लो आप पढ़ तो लिया, आपने नोट्स भी बना लिए, पर रिवाइज नहीं हुई, तो जब वो क्वेश्चंस होमवर्क क्वेश्चन के फॉर्मेट में आएंगे ना, वो चीज़ें रिवाइज होती हैं। एंड एक और चीज़, जब बच्चे आप होमवर्क कमेंट करते हो ना, तो दूसरे बच्चों ने जो कमेंट किया ना, आप उनको भी पढ़ा करो, राइट। उससे क्या होगा कि मान लो आपने कोई गलती कर दी, या फिर मैंने आपको कोई चीज़ बोली, या कोई बच्चा नीचे होमवर्क में या फिर कमेंट सेक्शन में कुछ पूछ रहा है, तो वहाँ पे आप एक कम्युनिटी भी बना सकते हैं कि आप अगर कोई बच्चा नीचे कमेंट कर रहा है तो वो उनकी रिप्लाई करे, उनका आंसर करे, इसमें भी बहुत फायदा होता है, राइट। एंड स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक और चीज़ बोली थी, अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आता, अगर आपको कोई टॉपिक समझना है, तो वो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि वर्ल्ड में आजकल सर ये नई चीज़ आई है या फिर ये आया है, आप इसके बारे में बताइए। तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं उस टॉपिक के बारे में, एंड विल मेक श्योर कि आपका वो जो टॉपिक है, हम नेक्स्ट वीडियो में, मैं उस वीडियो में, पूरी वीडियो में कहीं ना कहीं आपको उस टॉपिक को मैं कवर कर दूं, जिससे आपको वो चीज़ें समझ आ सके। तो
तो दोस्तों ये था हमारा सेशन, पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए।